Hello everybody, welcome to Upwork Masterclass and thank you for joining me in this course. This first module is going to be all about why freelancing and Upwork still work in 2025 and some common myths about Upwork and freelancing. अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं या आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं तो यू वुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट्स बिकम फॉर जस्ट एनी एवरेज पर्सन टू मैनेज देयर लाइफ ऑन एन एवरेज सैलरी. ठीक है, अगर एवरेज सैलरी पाकिस्तान में लेट्स से अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए पे अगर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स पे करने के बाद यू डोंट हैव अ लॉट लेफ्ट टू टेक होम, विच इज़ वाई फ्रीलांसिंग इज़ अ गो टू थिंग फॉर मैनी पीपल नाउ. लोग जॉब की निस्बत फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ एंगेज करके एट द सेम टाइम काम कर सकें and so they can live off a better life. Not just that, ठीक है, 2020 में जब से कोविड आया है, कोविड हैज़ चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली द वर्क कल्चर जो कि पहले ऑन साइट होता था और इन ऑफिस वर्क कल्चर जो हमारे थे उसको तब्दील करके रिमोट वर्क कल्चर आ गया. रिमोट वर्क कल्चर के साथ सब लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए कि इट नाउ बिकेम अ थिंग एंड पीपल जो कि पहले किसी ऑन साइट या ऑफिस वाली बेस्ड वर्क सेटिंग में कंफर्टेबल होते थे, दे आर नो लॉन्गर वर्किंग एट ऑफिस एनी मोर एंड दे वांट टू वर्क फ्रॉम होम मेनली बिकॉज देयर इज़ ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस टू मेंटेन देयर. आपको ट्रैवल जो है वो एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है काफ़ी सारा, और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो इफ़ यू नीड इट यू कैन ऑल्सो वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स एंड ऑफ कोर्स मेक सम मोर मनी आउट ऑफ इट. ऑन टॉप ऑफ इट ऑफ कोर्स $1.5 ट्रिलियन प्लस की इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग, तो इट्स वर्किंग, दैट्स व्हाई इट्स दैट हाई. That's all my take on freelancing and it works still क्योंकि ज़रूरत जो है वो ख़त्म नहीं हुई है अभी तक उन सर्विसेज की जो freelancers प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, कंपनीज आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद freelancers. रीज़न बीइंग कि freelancers को ऑनबोर्ड करना ईजी होता है एंड दे आर सिंस दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ आपको डील करना पड़ता है एंड देर आर सम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस स्टाफ, ठीक है, लीगल स्टाफ, तो वो सब चीज़ें जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं. दैट्स माई पर्सनल टेक. ये तो हो गया एवरीथिंग अबाउट वाई freelancing works in 2025. On top of that, why Upwork works in 2025? Because there are many people out there saying things like it's too saturated, again, clients are very low paying and things like that. Upwork, do you know how much Upwork made last year? In 2024, I read a post about at the end of 2024, the total turnover from Upwork was $3.8 billion. $1.5 ट्रिलियन की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में से $3.8 बिलियन की जो टोटल टर्नओवर था, जो रेवेन्यू था, दैट वाज जनरेटेड बाय अपवर्क. तो यू कैन टेक अ गैस कि अपवर्क का फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा पार्ट है. If you leave out Upwork and you are still doing freelancing, I don't think you have a very good chance at it unless you have a very good network of people and the word of mouth travels very fast around you. Upwork is a place where most and almost every freelancer has an account and where most Fortune 500 companies and giants are actually hiring for freelancers, which is why it still works to date. Then come the people जो कहते हैं कि लो पेइंग क्लाइंट्स हैं, वो एक्चुअली लो पेइंग क्लाइंट्स नहीं है. आपकी प्रोफाइल जो है वो उस तरह से सेटअप नहीं हुई हुई है एंड यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस टू गेट हायर पेइंग क्लाइंट्स एंगेज विद योर प्रोफाइल. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद सम पीपल ऑल्सो से कि अपवर्क जो है वो सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे, ऑफ कोर्स देयर आर टू मैनी पीपल बट यू हैव टू स्टैंड आउट. ठीक है, अगर आप अपवर्क की बात नहीं भी करते हैं, यू टॉक अबाउट जस्ट दिस नॉर्मली आप वर्क इंडस्ट्री की बात करें, टेक इंडस्ट्री की बात करें, इट्स एक्सट्रीमली सैचुरेटेड, द टेक इंडस्ट्री इटसेल्फ. ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लें, इट्स एक्सट्रीमली सैचुरेटेड. हाउ वुड यू गेट अ जॉब? हाउ वुड एनीबडी पे यू? बिकॉज यू स्टैंड आउट. ठीक है, हाउ वुड यू स्टैंड आउट? बाय योर प्रोफाइल. आपकी प्रोफाइल ही अगर स्टैंड आउट नहीं कर रही है तो वाई वुड एनीबडी हु वांट्स टू पे गुड एंड वांट्स टू गेट गुड सर्विसेज हायर यू? देन देयर इज द टॉक अबाउट कि न्यू फ्रीलांसर्स कैन नॉट कम्पीट. I wouldn't say that's true either. You can definitely compete. There are ways to move forward. आप ये बात करने वाले यूजुअली वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. I myself was one of them once. ठीक है, back in 2016 when I started freelancing for the first time, तो मैंने उस वक्त Upwork पे अकाउंट बनाया था and I tried very hard to get my first job. But since at that time guidance वगैरह वाला इतना ज़्यादा सीन नहीं होता था and there weren't too many people on YouTube as well explaining things. So it took me a very long time to understand things on my own and it took me a very long time to compile those things down into this proper course so that I can help other people where I needed help myself. So even if you have a new profile, it doesn't matter. ठीक है, आपकी नई प्रोफाइल को भी उसको डिस्प्ले कैसे करना है, उसको सेटअप कैसे करना है, and then how are you going to proceed forward with getting your first job is the purpose of this course. That's what you are going to learn here. Then there's always another talk about Upwork takes too much commission. Yes, it does.
But let's be serious, it also provides you with work without having to put a lot of effort into it. ठीक है? It also provides you with a pool of jobs. ठीक है? It also provides you with contractual based work. आपकी जो payment client pay करता है in terms of milestone is held in escrow. ठीक है? And these are all the things I think that are worth paying the commission for. If you didn't have a freelancing platform like Upwork, you would understand how difficult it gets to get a client on your own. So that's what this course is all about. It's going to teach you how to create a profile that stands out. Okay? It's going to teach you how to write proposals that client actually read and respond to. Okay? It's going to also teach you how can you land your first client. It's going to teach you how can you scale from $500 a month to $3,000 or $5,000 a month. Okay? And it's also going to teach you how to do all of these things with the help of AI in no time. Okay? It's also going to teach you about some AI tools that can help you do these things which are repetitive and take a lot of time, and you can just do them without any hustle in 2 to 3 minutes. So keep watching this course, and I'm sure at the end of it you will have become an Upwork guru yourself. This absolutely free Upwork Masterclass on YouTube is going to teach you everything that you need to know about getting started on Upwork, about setting up a profile, about how to write proposals that are actually read by the clients. ठीक है, लेकिन there is another part of this Upwork Masterclass available on my website, which is the Advanced Upwork Masterclass. उसमें आपको proposal writing की complete science and how to write proposals in a selling language is also included in that masterclass. There are also included some tips and tricks that I learned myself, ठीक है, throughout the time, जो कि मुझे किसी भी और Upwork tutorial में नहीं मिली. तो I have included those tips and tricks in that tutorial as well. और उसके अलावा उस Upwork Masterclass के अंदर आपकी profile optimization की कुछ ऐसी techniques भी added हैं which are not available on any YouTube tutorial publicly. So if you can give it a try, if you want to scale to an Upwork agency later on, or if you want to work with a team, take a while getting clients from Upwork, or if you are just looking to scale forward from being an average Upwork freelancer to the ones who have like $100,000 on Upwork, so please do give that course a try. I am absolutely sure you will get to learn a lot, and do leave a review as well if you find it useful. Thank you so much for watching anyways.